Hello friends, my name is Mukta and today we are going to cover NCERT class 6 chapter 5 major domains of the earth. Right? Earth is actually, if you see that earth is a complex zone, it is made up of, आपका देखा जाए तो lithosphere, that is the solid portion of earth, and there is atmosphere which is the gaseous layers that surround the earth. और atmosphere में भी क्या, atmosphere में कौन कौन सी gases होती हैं? Nitrogen, then comes second highest proportion oxygen, then argon, then आपका carbon dioxide, right? So it is made up of gases, right? Then comes hydrosphere, because the water that covers a very big area of the earth's surface, then it is hydrosphere. Biosphere is what? Biosphere is a narrow zone where we find that land, water and air that together which contain all form of life. तो यानी कि water, land और air, अगर इन तीनों की बात करी जाए, that comprises all form of a life, then put together it is called as biosphere, right? तो अब एक एक करके हम चीजें पढ़ते हैं. सबसे पहले we'll talk about lithosphere. What is lithosphere? We have already seen it is a solid portion of the earth that is called lithosphere, and it is comprises with the rocks of earth. Earth की जो crust है, that is thin layer of soil that contain nutrients, elements and etc. So right, there are two major divisions of the earth surface. Earth surface पे क्या है? दो major division हम कैसे करेंगे? Continent में, and then there is ocean basin, right? That is also depicted through this map. How many continents we have? It is very easy. We have 7 continents: Asia, Europe, Africa, South America, North America, and then Australia. और आपका ये नीचे आ जाता है Antarctica. Then how many oceans we have? ओशियंस की अगर बात करें, सबसे पहले तो हमारा इंडियन ओशियन यहाँ पे, एंड देन आर्कटिक, दिस इज द, ये जो एस शेप का आपको दिख रहा है ओशियन, दिस इज एक्चुअली अटलांटिक ओशियन, एंड देन पैसिफिक ओशियन, दिस इज द लार्जेस्ट ओशियन, प्रशांत महासागर भी से बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ओशियन, दैट इज पैसिफिक, एंड देन कम्स द साउदर्न ओशियन, राइट? So now continents को one by one करके हम लोग स्टडी करते हैं. Let's first talk about Asia. Asia is the largest continent, as everybody knows that. It covers 1/3 of the total land area of the Earth's surface, and it lies in the eastern hemisphere. जैसे कि हमने पिछले उसके अंदर देखा था. So if we'll divide this from this Greenwich meridian, so there are the two halves of the Earth. This is the eastern hemisphere. This is called as the western hemisphere, right? So हमारा जो एशिया है, where it is located? This is in the eastern hemisphere, right? So similarly, the thing is written here. It lies in the eastern hemisphere. Asia is separated from the Europe by the Ural mountain range. यहाँ पे आपको Ural mountain range दिखती है. This range is this Ural mountain. So this is the range, Ural mountain range, which actually separates this Asia from the Europe, right? From the Europe, and put together Europe and Asia are called Eurasia, right? Europe की बात करी जाए तो Europe is much smaller than the Asia, and the continent lies west to Asia. The Arctic Circle passes through it, and it is bounded by water body from the 3 sides. Like then come to Africa. Africa is the second largest continent. If we'll talk about it, it is the second largest continent, and one thing you need to remember, ये जैसे कि हमारा Africa है, and it's like Tropic of Cancer, Equator, and Tropic of Capricorn. All 3 lines passes from this continent, right? The same thing is written here. All 3 lines, Tropic of Cancer, Equator, and Capricorn passes through here. Sahara Desert, that is the world's largest hot desert, that is located in Africa, somewhere out here, right? And world की जो longest river है, that is river Nile, that is also located in Africa. अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की. नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड इट इज लिंक्ड विद द साउथ अमेरिका बाय द पनामा इस्थमस. अब इस्थमस और आपका ये क्या होती है स्ट्रेट? लेट्स हैव अ लुक हियर. Strait is what? Strait is a narrow passage of water that connecting the
two large water bodies like the sea or ocean. Suppose यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पार्क स्ट्रेट की, सो अभी पार्क स्ट्रेट क्या कर रही है, दो जो बिगर ओशंस हैं उसको कनेक्ट कर रही है, ठीक है. सो इट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर व्हिच कनेक्ट्स द टू लार्ज वाटर बॉडीज, बट वेयर एज द isthmus इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, इट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये एक छोटा सा लैंड का ही हिस्सा है दैट एक्चुअली कनेक्ट्स द टू large continents, or we can say two large continental masses or land masses. ठीक है. Now we'll talk about South America. South America is mostly lie in the southern hemisphere, surrounded by the ocean. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Andes है. Andes is what? Andes is a world's longest mountain range. ठीक है. और यहाँ पे आपको वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर भी मिलती है, दैट इज अमेज़न. डोंट कंफ्यूज इट विद द नाइल. नाइल इज एक्चुअली अ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, एंड आपका जो ये अमेज़न है दैट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. ठीक है. Now we'll talk about Australia. अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं. Australia is here. This is the smallest continent and it lies entirely in the southern hemisphere. अब अगर हम यहाँ पे पूछें कि ऑस्ट्रेलिया से कौन सी ऐसी लाइन क्रॉस होती है, so Tropic of Capricorn passes through the Australia, right? It is surrounded on all the side by the ocean. It is also called as island continent. If somebody is going to ask that what is the island continent, so which means we are talking about Australia, right? Island continent है. Antarctica completely lying in southern hemisphere. In fact, जो South Pole है that is almost in the center of this continent. यहाँ पे as such habitation तो उतना possible नहीं है, human settlement नहीं है, but still we have research stations there. बहुत सारी countries के यहाँ पे research stations हैं. Antarctica में in fact India is also having its research station here. और हमारे जो research stations हैं उनके नाम क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, right? Now we talk about hydrosphere. Hydrosphere क्या होता है? Earth, as we have already know that Earth is a blue planet. Earth का proportion अगर देखिए तो 71% is what? 71% of the Earth is covered with the water. Rest 29% is the land mass, है ना? 29% लैंड है और आपका 71% इसके ऊपर वाटर है. ठीक है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स. अब इसके अंदर whether the water is trapped into ice caps, whether it is into rivers, whether it is into atmosphere, तो जो सारा ही है वो सब कुछ कंप्राइज होकर के ही हाइड्रोस्फीयर कहलाता है. ठीक है. यहाँ पे देखो प्रोपोर्शन भी बता रखा है, जो आउट ऑफ 71% जो कंप्लीट 71% वाटर है हमारी अर्थ सरफेस पे, उसका 97% इज इन ओशन, 97.2% प्रिसाइसली इन द ओशन, एंड वी हैव ओनली 0.03% दैट इज इन द फ्रेश वाटर. रेस्ट इज स्टोर्ड इन आइस शीट्स. बाकी आपको आइस शीट्स के अंदर मिलेगा, ये आपके जो ग्लेशियर्स हो जाएंगे उसके अंदर मिलेगा. ठीक है. राइट. Here you can see through this graphical representations, it is depicting here that Asia is the largest continent, and second one is Africa, North America, South America, Europe, Australia, Antarctica. So इस तरीके से just depict किया हुआ है. Now we talk about oceans. Ocean is a major part of hydrosphere. We know that. और oceans पे ocean water is always in a moving condition. Movement होती रहती है, subsurface movement भी होती है, and there is a movement of surface movement also. So three chief movements हैं ocean waters की, that is through waves, tides and ocean currents, right? Waves होती हैं, there are certain oceanic waves, and there are tides, and there are ocean currents. अब ocean currents जो होते हैं, these currents are cold and warm also. Everything will be going to cover in the further chapters, like what is tide, what is oceanic waves, and what actually comprises the ocean currents, and what are the types of it, right? Pacific Ocean. अब अगर हम oceans की बात करें, as we have already covered that we have 5 major oceans. कौन कौन से थे? एक बार सोचो, सबसे बड़ा कौन सा था? Pacific, right? So it is Pacific Ocean. Then उसके बाद में हमने देखा था Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is what? S shape का था. And then we'll have Indian Ocean, आपका Southern Ocean, Arctic Ocean, है ना? यही सारे तो oceans थे.
Now we'll talk about Pacific Ocean, largest ocean है. In fact, Mariana Trench is the deepest part of the earth that lies entirely in the Pacific Ocean. Mariana trenches क्या होती हैं? Trenches और एक्चुअली में मरियाना ट्रेंच जो है दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट ओशन के अंदर. सबसे जो हमारा अर्थ सरफेस पे डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मरियाना ट्रेंच दैट लाइज इन द पैसिफिक ओशन, राइट. नाउ Atlantic Ocean, that is the second largest ocean, S-shaped का है, the flank of the North and South America and the western side. देखो अब यहाँ पे क्लियरली बता रखा है अटलांटिक ओशन की जो अगर आप देखो कि जो कोस्ट लाइन है दैट इज इंडेंटेड. इंडेंटेड कोस्ट लाइन क्या होती है? इंडेंटेड जैसे इस तरीके से ये कटी हुई सी कोस्ट लाइन ना आपको दिख रहा है, इट्स नॉट स्मूथ है ना. तो ये जो इस तरीके से जो कटी हुई कोस्ट लाइन है टीथ स्ट्रक्चर्स में आपको दिख रही होगी, दिस इज नोन एज इंडेंटेड कोस्ट लाइन. अब ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन होने का बेनिफिट क्या है? दीज कोस्ट लाइन आर बेस्ट फॉर द natural harbors, right? It actually, ये जो indented coastline, it provides an ideal location for the formation of natural harbors or ports. ठीक है? Now talk about Indian Ocean. India is the only country जिसके नाम पे कोई ocean है, so we should feel proud of कि हमारे कंट्री के नाम पे ओशन है. हाँ, इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन which is named after a country and shape जो है इंडियन ओशन की that is almost triangular. आपको अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये ट्रायंगुलर सी शेप का आपको ओशन दिखाई देगा. इट इज बाउंडेड बाय एशिया. एशिया से अगर आप देखो तो नॉर्थ में एशिया पड़ता है एंड देन अफ्रीका. इफ विल गो इन द प्रीवियस स्लाइड्स, दिस इज आवर इंडियन ओशन, राइट. तो यहाँ पे हमने इंडियन ओशन देखा, यहाँ पे नॉर्थ में तो आपका एशिया पड़ गया, इधर की तरफ देयर इज अफ्रीका एंड यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया एंड ऑल एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट. Then come to Southern Ocean. Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extend northwards to the 60 degree of south latitude. ये आपको अंटार्कटिका की तरफ मिलेगा. Then come to Arctic Ocean. Arctic Ocean जो है that is located in the Arctic Circle. अब जैसे हमने ये अगर अर्थ देखी तो इसके ऊपर Arctic Circle है यहाँ पे, है ना. नॉर्थ पोल साउथ पोल इसी तरीके से तो था. तो ये आपका जो आर्कटिक सर्कल है वहीं पे ही एंटायरली लोकेटेड होता है आर्कटिक ओशन, right? It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of a shallow water that is known as Bering Strait. अब ये Bering Strait से आपका connected है Pacific Ocean से, right? तो यहाँ तक I hope it is clear. कोई डाउट नहीं होगा. If at all you have any kind of a doubt, then एक बार दोबारा वीडियो को सुनना, then you'll get a clear understanding, right? अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की. एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ गैसेस. गैसेस से बना हुआ है, ठीक है. एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. अब वो लेयर्स क्या है? वो लेयर्स यहाँ पे बहुत ही इजीली तरीके से बता रखी हैं. द लोअर मोस्ट लेयर इज नोन एज ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर और उसके ऊपर आता है आपका ट्रोपोपॉज जिसे बोला जाता है एटमॉस्फेरिक लिड, ठीक है. दिस इज एटमॉस्फेरिक लिड. क्यों एटमॉस्फेरिक लिड बोला जाता है ट्रोपोपॉज को और ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर इज एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ अ लेयर. इसके नीचे तक सारा आपका मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना होता है, विच मीन्स क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, थंडर, लाइटनिंग, एवरीथिंग विल रिमेन बिलो दिस ट्रोपोपॉज. इनफैक्ट जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स होते हैं, दे ऑल्सो फ्लाई अबव दिस ट्रोपोस्फेयर. वो भी ट्रोपोस्फेयर के अबव स्ट्रेटोस्फेयर की जो लोअर लेयर होती है वहां पे फ्लाई करते हैं, राइट. बलून्स एक्चुअली फ्लाई बिलो इट. और यहाँ पे फिर उसके बाद में देन कम्स द स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड के साथ में इंक्रीज होता है. स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन फॉर द ओजोन. You need to remember one thing, ozone is actually beneficial for us in the stratosphere, but it is harmful for us in the troposphere. Why? Because ozone which is present in the stratosphere, वो क्या करती है? यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट. यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है. जो सन से डायरेक्टली जो यूवी रेज आ रही हैं, इफ इट इज गेट एब्जॉर्ब तो उस वजह से क्या होगा? अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी और हमें स्किन कैंसर और इस तरीके की बीमारियां नहीं होंगी, ठीक है. देन कम्स मेसोस्फेयर. मेसोस्फेयर इज नोन फॉर द मीटेओराइट बर्निंग. देन थर्मोस्फेयर.
जितना भी हमारा रेडियो वेव कम्युनिकेशन है, that is through this layer, and then comes the exosphere. The same thing is written more or less here, that Earth is surrounded by a layer of gas that is called atmosphere, and it is a thin blanket of the air that is integrated the important aspect of planet. Right? Atmosphere कहाँ तक extend करता है? At a height of 1600 kilometer. ठीक है? So the layer starting from the Earth's surface, that is called troposphere. Troposphere के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. Atmosphere is composed of 99% of the clean dry air, and we know that. हमने composition यहाँ पे देखी ही थी. Atmosphere में nitrogen सबसे ज़्यादा है, and then comes oxygen, then comes argon. Third number is argon. Remember that. ठीक है? Then comes carbon dioxide. So oxygen is very important. In fact, carbon dioxide is also very important gas, right? Because it absorbs a part of insulation. Now one thing you need to notice here, that density of the atmosphere, यहाँ पे लिखा हुआ है density of the atmosphere varies with the height. जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, the way you achieve like altitude, जैसे जैसे कि आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो maximum, तो जो density होती है air की, that is maximum at the sea level, and as we go up, so air will start becoming thin, right? तो इस वजह से जो climbers होते हैं, जो suppose mountain ranges climb करते हैं, climbers, they often find difficulty in breathing. तो इस वजह से उन्हें गैस, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, वो अपने साथ में कैरी करने पड़ते हैं. ठीक है? और this is about the low pressure and high pressure. Or one thing you need to remember, that actually wind always blow from high pressure area to low pressure area, right? Relatively high pressure area to low pressure area पे ही blow करती है, and accordingly movement of air यही होता है. ठीक है? Now come to biosphere. Biosphere, the domain of life. Biosphere, we have already know that biosphere is a narrow zone of contact between the land, water and the air, and to sustain the life. It is the zone of the life that is unique to the planet for their survival. Biosphere की अगर हम बात करें, तो biosphere the organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom or animal also. And plant or animal, देखो everything is exist here, plant, animal, water, air and land, इन सब का साथ में मिलाकर के जो composition है to sustain the life, that is the biosphere. For example, अगर हम यहाँ पे देखें, there could be a submergence of the land that happened. एक मिनट, यहाँ से कट कर देना. हाँ, यहाँ से रिपीट करिए. एक मिनट कट कर, मैं पढ़ते हूँ एक बार. The three domains of the earth that interact with each other, that affect each other in some way. For example, cutting of the forest and fulfilling our needs for the wood, clearing of the agriculture may lead to remove the faster of the soil and the slopes, right? तो इस वजह से it's an interchange actually, में discharge of the waste materials into lake, rivers and water sustainable for the human use, emission from the industries, thermal power plants और vehicle से जो pollutions निकलता है, carbon dioxide, that is an important constitute of the air. अब क्या हो रहा है, carbon dioxide that is started increasing, अभी increase हो रही है, so उस वजह से क्या हो रहा है, global temperature भी increase हो रहा है. Global warming में इसका बहुत बड़ा role है, right? And the term global warming is, there is no need to limit the use of resources of the earth to maintain a balance of the nature between the domain and the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. यानी कि we actually need to maintain the balance between hydrosphere, between आपका lithosphere and biosphere, right? To make a balanced life. So this is all about the chapter. I hope you have get a fair understanding of it. और अगर समझ में आया है तो फटाफट से इसके MCQs करते हैं. The first MCQ is the mountain range that separates the Europe from the Asia. हमने पढ़ा था कौन सी mountain range है. हिमालय तो हो नहीं सकती है, इंडिया में है. एंडीज कैसे होगी, longest range कहाँ की है, ये अपनी साउथ अमेरिका की, right? यूराल्स होगा, then your answer would be Urals. Then come the continent of the North America is linked to the South America by, किससे continent link हुआ हुआ है? Canal is not the option, canal तो हो नहीं सकता. Strait,
तो करो। कैनाल नहीं हो सकता है। स्ट्रेट, स्ट्रेट वी हैव ऑलरेडी सीन। स्ट्रेट क्या होती है? एक नैरो चैनल है ऑफ वाटर दैट एक्चुअली कनेक्ट्स द टू बिग वाटर बॉडीज, है ना? और isthmus, isthmus would be your answer. Why? Because isthmus is what? That actually a narrow piece of land that connects the two large land masses. तो इस वजह से यहाँ पे आंसर होगा isthmus. Now the major constituent of the atmosphere by percentage, पता है नाइट्रोजन होगा, कितना है नाइट्रोजन का परसेंटेज? ऑक्सीजन it is 78%, this is 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, right? Domain of the earth consisting the solid layers is, अब जैसे solid rocks है, solid rocks कौन से डोमेन में आएगी? लिथोस्फीयर में आएगी. एटमॉस्फेयर इज गैसेस, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर, तो सॉलिड रॉक क्या हुआ? आपका लिथोस्फीयर. Which is the largest continent? सबको पता है largest continent is Asia, Africa is the second largest and Australia is island continent. ठीक है, अब फटाफट फिलिंग द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं. डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज इन पैसिफिक ओशियन. कौन सा था? हमने एक ट्रेंच देखी थी, इफ यू कैन रिमेम्बर. सो इट इज अ मैरियाना ट्रेंच. ठीक है. The ocean is named after a country. अरे हमारी अपनी कंट्री है ना, कौन सी है? इंडिया. तो इंडियन ओशन हो गया ये तो. The dash is a narrow contact zone of land, water and the air that supports life. कौन सा जोन है ये? बायोस्फीयर है. ठीक है. The continent of Europe and Asia together are known as, पढ़ा था क्या होता है? यूरेशिया. The highest mountain peak on the earth is, एक ही तो है हमारी माउंट एवरेस्ट. कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? इंडिया में है? नहीं नहीं, इंडिया में नहीं है, इट्स इन नेपाल. Right? So I hope with this you are clear with the chapter 5 and this is all about the chapter. Thank you so much.